Welcome back to English class. Students, today I am going to start literature portion, okay? Chapter number 8, My Elder Brother. From NCERT, Marigold book. So now open your book. Let's start the chapter. Chapter number 8, My Elder Brother. Written by Munshi Premchand. He born on 31st July 1880 and died on 8 October 1936. He was an Indian writer famous for his modern Hindustani literature. His full name was Dhanpat Rai and better known with his pen name Munshi Premchand. So students, this is a very interesting story. There is a conversation between two brothers and both are different from each other. They have different opinions, they have different thoughts. So let's start the story. First of all, I want to tell you that this story is divided into three sections. This story is divided into three scenes. Scene 1, scene 2 and scene 3. Okay? So first of all, I am going to read scene 1 completely. Okay? Then I will explain scene 1 in English and after that I will give Hindi interpretation of first scene also. Okay? So let's start the story and enjoy it. So this is a story by Premchand titled Bade Bhai Sahib, means my elder brother. So this is a story by Premchand titled Bade Bhai Sahib. The story shows that experience is as important as hard work. It means both are important. Experience is also important as hard work. Okay? So the story begins with two brothers and how they are different from each other. The narrator, it means the elder brother, is 5 years older than his younger one. Similarly, the elder one is 3 grades ahead of the younger one. The brothers live together in a hostel room and have very contrasting opinions. The elder brother is a hard-working fellow and studies hard. He wishes to build a strong foundation through his education, but on the other hand, the younger one prefers playing, flying kites, playing marbles, enjoy the beauty of nature, etc. It means he prefers playing all day long and doesn't give much time to his studies. Thus the elder brother always scolds his little one to be more sincere. Moreover, he shows himself as an example of a disciplined student. Okay? So here the story begins. First is scene 1. There is a hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother, means Bhaiya, is reading a book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. So let's start. Let's see the conversation between two brothers, which is very interesting, and they show the contrast opinion between two brothers. So let's start the story. First of all, Bhaiya said, "What are you doing, Munna?" Munna, "I am drawing." Then Bhaiya said, "When will you study? And where were you in the morning?" Munna, "Turning pale
in order to learn the subject, to speak or write English properly. Tremendous effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field and play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit and study? Then Munna replied, "Oh bhaiya, there is a big mela in the village today. Should we go?" Bhaiya, have you ever seen me going to a fair or going to watch cricket or hockey match? I don't want to do all these things. I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time? You are simply wasting father's hard-earned money. So now Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds like this. So now Munna, "Bhaiya, I feel like running away and going back home," because he was crying at that time. Then Bhaiya said, Now, stop crying. Put on a nice smile. Look, I will make a timetable for you to follow. Get up and down." Then Munna said, when he saw the timetable, he said, "Bhaiya, when is the time to play?" Then Bhaiya replied, "Play? What is need? What is the need, Munna?" Munna, "Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like to touch and go and do sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything." So in scene first, there is a hostel room, there is a study table and chair. Two brothers are sitting there. Bhaiya is reading a book, but Munna, the younger one, he is drawing a picture of birds and animals. So here the story begins. Here, the elder brother asks the younger one what he was doing. He replies that he was playing and drawing. At this, the elder brother says that if he plays all day long, then when will he study? Munna wants to know how his brother manages to sit so long and repeat the same line, same lesson, same poem for several times with a beautiful handwriting. How can he manage all these things? Why he writing the same thing again and again? The elder brother replies that he wants a firm building on a firm foundation, because English is not a child's play. It's not a child's game. It requires hard work to write and speak correct English. But he said to his younger brother that when you got the time, you will start playing. Can't you sit properly and study? Munna does not want to make a reply. He doesn't want to give any reply. And he said, instead he asked his brother if they could to see the fair organized in his village. He said that he never prefers such things to study. He said that I can spend 2 years in the same class, but can you afford for your whole life? You are simply wasting the money of our father's hard hands. For this,
Then 6 to 8 a.m. start English. 8 to 9 a.m. maths. 9 to 9:30 a.m. history. 3 to 3:30 p.m. then after school. 5 to 6 p.m. start grammar. Half an hour for strolling. 6:30 to 7 p.m. English composition.
and 3 classes ahead of me. आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और क्लासेस में 3 साल ही आगे हैं. I wonder why you are keeping writing the same words 20 times. मैं आश्चर्यचकित होता हूँ जब आपको देखता हूँ कि आप एक ही चीज को कितनी बार लिख रहे हैं. एक ही सेंटेंस को नियर अबाउट 20 टाइम्स आप लिख रहे हैं. क्यों? And copy poem several times in beautiful letters. और पोएम को एक बार नहीं कई बार ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स में लिख रहे हैं. Why you are doing all these things? Why you are repeating it? Then भैया रिप्लाइज. भैया देखिए क्या जवाब देते हैं. You know studying English is no child's play. तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. You know studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए इस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है. To speak or write English properly, tremendous effort is required. इंग्लिश को अच्छे से बोलना, प्रॉपर्ली बोलना और प्रॉपर्ली करेक्ट ऑर्डर में लिखना और करेक्ट ऑर्डर में बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस एफर्ट की जरूरत होती है. ट्रेमेंडस मींस होता है बेटा जायंट एफर्ट, बिग एफर्ट. ओके, तो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश करेक्टली लिखने और बोलने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट की जरूरत होती है. बहुत ही बड़े, बहुत ही ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, बिग एफर्ट की जरूरत होती है. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रॉपर्ली करेक्टली बोलने और लिखने के लिए थोड़े मोड़े एफर्ट की जरूरत नहीं है. इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट. बहुत ही बड़े एफर्ट की जरूरत होती है. इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. कोई बच्चों का खेल नहीं है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपर्ली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जब तुम्हें मौका मिलता है पढ़ाई करने का, इंग्लिश सीखने का, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idly away with friends for fun. Can't just sit down and study. जब तुम्हें टाइम मिलता है इंग्लिश सीखने का, बोलने का, पढ़ने का, अपना एफर्ट दिखाने का, उस टाइम पर तुम फील्ड में चले जाते हो खेलने के लिए. पतंग उड़ाते हो, मार्बल्स खेलते हो. मार्बल्स बेटा वो कंचे. ओके, तुम्हें जब टाइम मिलता है तो तुम पतंग उड़ाते हो, कंचे खेलते हो. अब देखिए भैया ने तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें उसको सिखाई. फिर मुन्ना ने क्या किया? उसने उनकी बात को कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि भैया गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है. शुड वी गो देयर? क्या हम वहां जा सकते हैं? जब वो मेले में जाने की बात करता है तो भैया उसे बताते हैं कि क्या तुमने आज से पहले मुझे कभी किसी मेले में या क्रिकेट मैच या हॉकी मैच खेलते हुए देखा? या हॉकी मैच में को देखने के लिए मैं कभी गया आज से पहले कभी? आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक. मैं किताबें पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ इन सब जगह जाने से. क्या तुमने कभी मुझे ऐसी जगह जाते हुए देखा? मुझे इन सभी जगह जाने से बेहतर लगता है कि मैं बैठ करके पढ़ाई करूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक ही क्लास में 2 साल लगा दूं. बट
मुन्ना ने जैसे देखा टाइम टेबल, उसने तुरंत ऑब्जेक्ट किया कि अरे भैया इस टाइम टेबल को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं खेलूंगा कहाँ? तो भैया ने कहा खेलने की क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड टू प्ले। तब मुन्ना ने बताया कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ग्रीन फील्ड्स में जाकर के ठंडी ठंडी हवा को एहसास करना, पतंग उड़ाना, मार्बल्स खेलना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉलीबॉल या बास्केटबॉल मुझे अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच रही है और मैं नेचर को एंजॉय करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और जब मैं फील्ड में जाता हूँ भैया तो मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ, एवरीथिंग आई फॉरगेट। तो ये तो ओपिनियन था मुन्ना। तो यहाँ हमें पता चला कि दो भाइयों में कन्वर्सेशन हो रही है। बड़े भैया जो कि सिंसियर है, अपने स्टडी को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, और मुन्ना जो कि छोटा है, तो जैसा कि छोटे भाई बहन होते हैं बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होते हैं वो, तो वैसा ही बिहेवियर कुछ मुन्ना का भी है। वो स्टडी को लेकर के बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, और भैया को भी देखता है जब वो पढ़ते हैं तो उन पे भी वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है कि क्यों आप इस तरह से पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा। बट भैया ने टाइम टेबल बनाया, उसको डांटा, उसको समझाया कि नहीं, स्टडी इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स गेम, इट्स नो चाइल्ड्स प्ले। इसके लिए ट्रेमेंडस एफर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रेमेंडस एफर्ट के लिए हमें अपना टाइम स्टडी पर देना होगा, मैक्सिमम टाइम स्टडी पर देना होगा। बट मुन्ना उससे एग्री नहीं करता है और वो ऑब्जेक्ट करता है इस टाइम टेबल को कि इसमें तो खेलने का कोई टाइम ही नहीं है, मैं खेलूंगा कब? तो वो अपने भाई से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता है। तो here the scene first has been completed. So this story is about two brothers who have contrasting personalities and opinion. Here the elder brother is the narrator who tells his younger brother about life. The age difference between the brothers is 5 years and 3 grades. The story tells us about their lives and their relationship. It also tells us what the dynamics are between younger and older brother. Moreover, it is a story that teaches us to listen to our elders. They always have more experience. Therefore, it is not about the arrogance we as younger people should have. It is about giving them the respect which they deserve. So students, we will have some limitation which is regarding to the time. So students, we will stop here, but will continue on the next day also with the next scene, second scene of this story. Okay students, it's over for today. Stay at home and be safe and keep studying. Okay, next time we will meet with a new video very soon.